Dear viewers and learners, Assalamu alaikum. आज चूंकि important वीडियो इलेक्शन कमीशन आज वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अमिच काम क्या यह कर सेटअप गोमुत यम साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कत करान यह हसा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमस बॉडी यानी यह ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यम जन मेन फंक्शन कंडक्ट करान वोट कंडक्ट करान इलेक्शन पार्लियामेंट्री इलेक्शन तो बी स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन यानी यम स्टेटस में लेजिस्लेटिव इलेक्शन गसान या PM बनाने खतर पार्लियामेंट्री इलेक्शन गसान तिम कंडक्ट करान इलेक्शन कमीशन यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह हसा डील यह पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करान यानी 15th पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन दिवान कत रिलेटेड टू इलेक्शंस यम इलेक्शन आर्टिकल 324 पे बराबर आर्टिकल 329 यानी तम आर्टिकल यानी 324 आर्टिकल पे बराबर 329 आर्टिकल तान यम जन तिम डील करान कत अमिक पावर्स क्या अमिच फंक्शन क्या अमिक टीनियर क्या कंपोजिशन क्या इलेक्शन कमीशन यानी इलेक्शन कमीशन यह आर्टिकल डील करान सह करान 324 पे बराबर 329 आर्टिकल तथ मज क्या मेंशन करान अमि इलेक्शन कमीशन पावर्स क्या अमिच फंक्शन क्या अमिक टीनियर क्या कंपोजिशन क्या इलेक्शन कमीशन बी पार्ट XV ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सह मेंशन करान रिलेटेड टू इलेक्शंस इस इलेक्शन कमीशन यह परमानेंट बॉडी यह सेटअप आम कर 25th January 1950 मज यानी तेल परमानेंटली बनेम आफ्टर इंडिपेंडेंस यह बनेम 5 जनवरी 1950 मज बनेम इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शन कमीशन अत अगर अमिच कंपोजिशन वो गोडनथ ऑरिजिनली यह सिंगल बॉडी यानी यथ ओनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी 1 मेंबर बॉडी लिखान यानी यथ गोडनथ यम सात ऑरिजिनली 25th January 1950 में सेटअप आय कर अत असली 1 मेंबर बॉडी यानी यह तेल अत सिर्फ आसान चीफ इलेक्शन कमिश्नर मगर फॉर द फर्स्ट टाइम 2 एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर्स आए अपॉइंट कर मगर तिम कर आए अपॉइंट कर ऑन 16th October 1989 यानी तेल बने ये मल्टी मेंबर बॉडी यानी यह बने तेल 20 एडिशनल अत मर्ज यानी कर इलेक्शन कमिश्नर्स वन इलेक्शन कमिश्नर्स तिम आय कर 16th October 1989 मगर 1989 तम पे हसा बने बी ये सिंगल यानी 1 मेंबर बॉडी यानी अत आय तिमन शॉर्ट टीनियर यानी यम जन 2 इलेक्शन कमिश्नर्स शॉर्ट टीनियर गो यह बने पे वापस बी अत थोक ओनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर यह बॉडी दिस वाज डन टू हैंडल द इंक्रीज वर्कलोड ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑन अकाउंट ऑफ 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जन गए एक्ट 1988 मज यानी अत क्या थो बी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स क्या जन यह वर्कलोड चीफ इलेक्शन कमिश्नर सह किस करो कम यानी 61 68 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जन गई 1988 मज तमे हिसाब आयो बनानो पे 16th October 1989 मज आए 20 इलेक्शन कमिश्नर्स अत मज अपॉइंट कर यानी यस वोट कास्ट करान अमिच एज गोडनथ इंडिया में 21 मगर यह आए पे कम कर यह आए 18 ईयर्स यानी इंडियन सिटीजन 18 ईयर्स ओल्ड सह पन वोट कास्ट कर यानी अम ब्रोट गोडनथ 21 यमिस एज सह हे वोट कास्ट कर मगर यह आए लवर कर 21 पे बराबर 18 ईयर्स एज तम पे आए बी पे अगेन इन बासे वर्कलोड गई ज्यादा चीफ इलेक्शन कमिश्नर 1 October 1993 मज आए बी पे कर एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट The concept of multi-member commission has been in operation since then. यानी तन पे वो तेल मल्टी 3 member body यानी अत मज चीफ इलेक्शन कमिश्नर तेल 2 एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर्स यानी गोडनिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर बी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट कत मज जन कंपोजिशन इलेक्शन कमिशन यानी इलेक्शन कमिशन मज गोडनिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर बी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स यम जन पे बी आय कर appoint 1st October 1993 as per article 324 यानी
Section 3rd, when any other election commissioner is so appointed, the chief election commissioner shall act as the chairman of the election commission. यानी ये बनाते chairman of the election commission. As per Article 324, Section 4th, the President hasa kare appoint after magar consultation with election commission, such as regional commissioners agar as karan asan as appoint, time saat che appoint emis karan magar consultation che pevan nine election commissioners, such regional commissioners. As per Article 324, Section 2nd, the Chief Election Commissioner and other election commissioners shall be appointed by the President. Yani telvano Chief Election Commissioner be imzan be z member election commissioners timan appoint karan teli President of India. Yani yasa MC portfolio President karit Chief Election Commissioners appoint be imzan z other election commissioners z member timan karan appoint President. When agar wucho a tenure kya rozan, they have a tenure of 6 years. Yani chief election commissioners be 2 other election commissioners timan asa ka 6 years rozan timan charge or up to the age of 65 years. Ya agar tahaz age of 65 years tan hekiye in tenure rozit, whichever is earlier. The term of the chief election commissioner and other election commissioners is fixed by the president. Yit fix hekan kus karit President of India. Yani yeman term kya tha chief election commissioners be other election commissioners fixed by the president. Current chief election commissioner Rajiv Kumar hasa chief election commissioner. Chief election commissioner president Rajiv Kumar, magar amis be election commissioners now Sukhbir Singh Sandhu, be Ganesh Kumar, yim other election commissioners. Agar when Chief Election Commission remove kar, amis karan removed president, magar kasped on the basis of a resolution. Joseph passed effected by both the houses of parliament, in a Rajya Sabha Lok Sabha with special majority, ethics, ethos and ground of proved misbehavior. Agar misbehavior asem kah kormun, tele hasa kemis president remove kar kemis chief election commissioners. Powers the functions of election commission broadly categorized into 3 heads: administrative powers, advisory and quasi-judicial powers. Model code of conduct is a set of guidelines issued election commission to regulate campaigning, general conduct, speeches, meeting of parties and candidates during election. I'm Pachibak State Election Commission. State Election Commission. The election to the local government is not the subject of Election Commission of India. Election Commission of India should conduct karan local government चीज बनावान तिमन election करानी conduct के Parliament under 73rd and 74th Constitutional Amendment Act provide karan for separate state election commission for elections of panchayats and municipalities tamik conduct karan state election commission. Article 343 K provides for the constitution of a state election commission asa karo. Article 343 K usan vananchu tu banayusa state election commission to be appointed by the governor. Appoint kuch karan state election commissioners or karan governor of the state shall appoint karan. State election commission consists of state election commissioner who shall be appointed by the governor. Magar amichu karan state election commissioner appoint karam governor. Magar ye remove hekna karit governor ke though appointed by him. Appoints karan governor. Magar never remove hekna karit governor ke. State legislatures make provisions with respect to all matters related to elections to panchayats. Yani state legislatures tim banavan kam khatra ke law ch banavan tim matters yem sat election to panchayat ch karan. Panchayat election ch asan asli zimwari state election commission se. Tenure of the office and conditions of service of state election commissioner shall be determined by the governor. Yani yatti kuch karan tenure conditions, service conditions of election commissioner, state election commissioner, usan godnathi mention karan by the governor. So on you see videos, ya shows election commissioners mutalik little bit knowledge. Thank you.